हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाटर फंक्शन होइस्टिंग, ओके, और व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन होइस्टिंग। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट एग्जैक्टली इज फंक्शन होइस्टिंग, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. ओके, I'll create two examples over here and I'll try to explain you with the examples ki in which case hoisting is working and in which case hoisting is not working. Okay, so for example, if we have a function over here, function a, and then inside this I'm defining it and I'm saying console dot log and then I'm printing value like this. Okay, this is I've created a simple plain function. Okay, and before I have created this function, I am calling this function. Since it is a simple function, it is not returning any value or anything, I can simply call it, I can simply execute this function, right? So I am executing this function away. This is one example that I have created. Okay, let's talk about another example now. For example, if I say over here const b is equals to function and then bracket and then curly brackets, and then inside this one I'm again writing console dot log and then value. Okay, like this, and then bracket closed, and then I'm executing this b over here. Okay, so now what exactly I'm doing over here is the first mistake that I'm making is that I'm utilizing some function before it is even declared. Okay, even if it is before it is even defined. Okay, so for example, if I talk about this statement, okay, so the function a is not even actually defined right now, but I'm still using and utilizing that function right before the declaration of the function. Okay, now in this case also I'm doing the same thing, that even before the b function is created, I'm starting to utilize that function. Okay, so now what will happen in this case is that what do you think, like which will work and which won't work? So in this case what will happen is that this function will get executed, but this function will not get executed. In this case it will start giving you a reference error that this b variable is not present. Okay, like this, that b is not present. But in this another case, okay, what will happen is that जावास्क्रिप्ट का इंजन जो होता है is basically ये फंक्शन वर्क क्यों करेगा इस सिनेरियो के अंदर, why is this function is not going to give you any error, is because JavaScript engine what it does is that it takes all the functions that you have created and it will hoist at the top of your file, which means आपने किसी भी फाइल को even if you have created at the end of the file, still it will be available at the starting of the file. Why is that so? Because the moment once your JavaScript engine is going through your entire code, it basically goes through all of your functions which are created as a normal functions, not the functions which are created as a variable. Okay, these are functional expressions, these are not normal functions. Okay, so because in this case JavaScript engine इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, नॉट लाइक अ फंक्शन. ओके, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ वेरिएबल इन दिस केस. ओके, सो दैट इज वाई इट विल स्टार्ट गिविंग एन एरर that b is not even defined but you are still trying to use it. Okay, but in this another case it will be treated as a function, and because it will be treated as a function, so what JavaScript engine does is that it takes that function and it hoists it at the top of the file, सबसे top of the file के ऊपर hoist करता है, and because of which you are able to access that function at any point of the time. Okay, अगर आपने डिक्लेयर किया है तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद में अगर यूज़ कर रहे हो, अगर आपने डिक्लेयर करने से पहले उसको यूज़ कर रहे हो तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन hoisting. So what does hoisting does is that all the normal functions that you have inside JavaScript, it will be hoisted at the top of the file. Okay, hoisted का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसका मेमोरी एलोकेशन हो जाता है. ओके, जो भी आपका फंक्शन है उसका मेमोरी एलोकेशन प्रॉपरली हो जाता है. ओके, इसलिए वेन एवर यू वांट टू एक्सेस दैट फंक्शन वो आप नॉर्मली एक्सेस कर सकते हो. इस केस के अंदर ये वर्क करेगा पर इस केस के अंदर वर्क नहीं करेगा. रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट कि इस केस के अंदर वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, नॉट लाइक अ फंक्शन. इस केस के अंदर वो वर्क करेगा बिकॉज इस केस के अंदर वो एक फंक्शन है, नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल. ओके, सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ट्राई टू द कोड कि किस तरह से एक्चुअली इस तरह से वर्क करता है या नहीं करता है. ओके, सो आई create a new file. I'll just give it as name as hoist.js. यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, फंक्शन a. लेट्स ट्राई टू टेक द सेम एग्जाम्पल ओनली. लॉग करते हैं हम यहाँ पे a
इज एग्जीक्यूटेड। ओके, हमने यहाँ पे एक कॉन्सोल स्टेटमेंट ऐड किया जिसमें हम लोग ए इज एग्जीक्यूटेड कर रहे हैं बस, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद में इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, लेट्स से आई से नोड hoist.js, आपको किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है, आपको नोड यूज़ करना है एंड देन योर जावास्क्रिप्ट फाइल नेम, ठीक है, एंटर एंड देन आपका ए इज़ एग्जीक्यूटेड। ओके, अगर सेम स्टेटमेंट को मैं डिक्लेरेशन से पहले ऐड कर दूँ, ओके, ओवर हियर अगर मैं ऐसे ऐड करूँगी तभी भी इस फाइल को वापस रन करो तो ए इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर मैं सेम सिचुएशन को अगर चेंज कर दूँ, ठीक है, लेट्स कमेंट इट, अगर मैं यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करूँ जिसको मैं एक फंक्शन की तरह वैल्यू दे रही हूँ, सो फंक्शन एंड देन ब्रैकेट लाइक दिस, और मैंने यहाँ पे लिखा बी इज़ एग्जीक्यूटेड। ओके, अगर मैं इस बी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगी एट दिस स्टेज तो आपका बी इज़ एग्जीक्यूटेड। ओके, बट अगर बिफोर द डिक्लेरेशन इफ यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट, if you are trying to execute before the declaration, then it will start giving you a reference error, okay, because you are trying to access it before its initialization. So this is the concept which is known as your hoisting concept. You should always remember ki your functions, the best way of writing the code is that always remember to make all the declarations and definitions at the top of the file, और उसके बाद में ही आपको you are utilizing them in the rest of the file. That is the best way of writing the code, okay. But if that is not happening, make sure that you are creating normal functions in that case, okay. So this is the concept of function hoisting कि जो भी आपके normal function होते हैं they will get hosted at the top of the file in the memory allocation, and then because of which you are able to access them even before the declaration of the function. Whereas in case of function expression, which is this one, which is function b, okay, in this case function expression, that is not going to happen because it will be treated not like a function, it will be treated like a variable, okay. So that's it for this video. I hope you have understood it. If you have understood the concept, please leave a comment down in the video and then let me know what your feedback is. Thank you so much for watching.